doesn't fear to do something new on TV, and the man who is probably solely responsible for having that conviction that I'm going to get 24 on Indian television. CEO Colors, Raj Nayak, please join us on stage. Good evening, everybody. Thank you for being here with us this afternoon. It's a very, very exciting day for us. पिछला अक्टूबर में हमने लास्ट सीज़न किया था या उससे पहले तो सीज़न 2 करने के लिए हमको बहुत सा वक्त लगा. It's not an easy show to do, as you all know, but the beauty about 24 is it is not only the most expensive fiction show that has ever been produced in this country. I think this is one show we hoped would be a game changer for Indian television. Many people have tried this after us, haven't succeeded. 24 season 1 was a great success for us, the kind of mileage that it delivered. We are hoping that season 2 will be even bigger and better. There has been a lot of learning from season 1, and hopefully in season 2 we'll rectify those little tweaks that we need in terms of making the show a little more mass. One of the best things about this show is a lot of integrations that can happen, and we've signed Maruti S Cross as our presenting sponsors this year. And as you know, Maruti is probably India's #1 car company, and they have variety of vehicles, and what it allows us to do is to integrate different cars of Maruti onto the show, and Maruti has been very kind to come on board this year. Season 2 is going to be bigger and better, like I told you. We have Abhinay here, okay, who directed the show, and I think he's won more awards for this show than all the work he's done before. But having said that, I won't take too much of your time. I'll invite the man himself, without whom 24 would never have happened. Please give a big hand to Jai Singh Rathod. Well, this is the day I've been looking forward to. It's been 2 years. I've counted every day. Okay, when will this moment come when we'll announce the second season for 24? Well, the entire team and all of us, we all have been working very, very hard. Matter of fact, Vinay came 2 days back and he's completely dived. The writers were working, we were holding fort when he was not around. And we all have been working very hard since the last 1 year. So if it's starting after 2 years, don't think that we have just started working. We have been working since a year on this show. And he's come and he's completely dived. And we all have dived into the show. Matter of fact, we were together till very late in the night at the office. Well, I can only say that I've been working in this business में, show business में, film industry में, entertainment industry में 38 साल से काम कर रहा हूँ. और मगर आज मैं आपको सच्ची कहता हूँ कि इतना charged, इतना motivated, इतना passionate और इतना excited मैं अपने पूरे करियर में नहीं रहा हूँ. Wow. देखिए हम लोग मैं ये इतना दावा नहीं करूँगा कि मैं कुछ हाई फ्लोन चीज़ें बोलूँगा कि हम सेकंड सीज़न में ये करने वाले हैं, वो करने वाले हैं. हमने सीज़न 1 में बहुत कोशिश की, सब किया, सब बहुत तारीफ़ हुई, बहुत सक्सेसफुल हुआ शो. मगर हमें अभी भी लगता है कि हम इससे भी बेहतर कर सकते हैं. और हमारी कोशिश यही रहेगी, अगर राज साहब और कलर्स और ऑफ कोर्स जो हमारे नए पार्टनर्स हैं मारुति, उनका अगर साथ रहा और साथ है, जिस वजह से हम यहाँ हैं आज इस मंच पर, हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस शो को हम सिंपल तो रखेंगे, मगर कोशिश ये करेंगे कि फर्स्ट सीज़न से
बड़ा हो, ड्रामेटिक हो, उससे भी ज़्यादा थ्रिलिंग हो। और अगर हमने 70-80% को हमने कोशिश की कि 70-80% हम सक्सेसफुल रहे हैं, इस बार हम कोशिश करेंगे एटलीस्ट, ज़्यादा बड़े बोल नहीं बोलूँगा, 90% तो कर सकें हम। मगर मैं ये भी बोलूँगा कि पार्टली शो इसलिए डिले हुआ कि ये हिंदुस्तान का दिल धड़कने लग गए थे, तो इनका टाइम का थोड़ा प्रॉब्लम था। ये प्रॉब्लम में ये भी होता है। और अभिनय जो है वो अपना फोर्स लगाने में पड़े थे, तो आई केप्ट टू टेल हिम मे द फोर्स बी विद यू अभिनय, नाउ दैट वी आर डूइंग द शो। तो the moment we are waiting for, it's a privilege, it's an honor for me to invite on stage Mr. Khalsi. Good evening, ladies and gentlemen, and I'm very glad here to be standing next to Jai Singh Rathod. And I would like to say that our association with Colors has been quite long, and we are associating ourselves with various entertainment programs of Colors. At the same time, when the opportunity came for 24 Season 2, we thought that this is the program that we wanted to associate with very strongly. And I'm proud on behalf of our company to be announcing that we are the principal sponsors for this program. And as you know, that this is a program which is based on an international format, and it's a wonderful action thriller which is liked by the premium audience. And these are the audience who have global exposure. They like action, and they try to be exclusive and stand apart from the crowds. Similarly, we associated S-Cross, our premium crossover, with this program. Now, this is a product which is again meant for the customer who has global exposure, young customer who likes to be exclusive and who likes to have a sense of power. Another similarity I found was that as we see Jai Singh Rathod, a soft, sophisticated person, but when it comes to dealing with crime, he is tough, he is rugged, he is rustic. Likewise, our S-Cross, it is as smooth on the rough and tough roads as it is on the plain roads. So we found a very good association, and I'm glad to declare that Jai Singh Rathod would be using an S-Cross during 24 Season 2, and a powerful personality like Jai Singh Rathod, supported by the most powerful vehicle from House of Maruti Suzuki, certainly the duo will do wonders in saving the interests of our country. Thank you. Thank you, Khalsi Saab. We'll do our best to live up to the Maruti brand and to live up to your expectations and do our best. कलसी जी, मैंने सुना है कि आपके पास एक बहुत प्यारा सा की नोट है जो आप सिर्फ अनिल जी को देना चाहते हैं। ये की नोट क्या है? बिल्कुल, that is exclusively for Jai Singh Rathod, and I'll be very glad to hand it over to him. Can we have the key, please? Can we have the key, please? I think we should invite the other people on stage, the force behind 24. There are 2-3 other people here. We can't call, there are many people here, but we can't call everybody. But the director of the show, Abhinay Dio. Head of Programming Colors, Manisha Sharma.
जितने भी कलर्स में आप शो देखते हैं ना, अगर आप कुछ भी अच्छा बोलना चाहते हैं इनको बोलो, गाली देना चाहते हैं इनको बोलो. ये प्रोग्रामिंग है हमारी मनीषा शर्मा. Can I also request Sanjeev Handa from Maruti to join us, please? There you have it. For season 2, 24. The force, like he said, behind it. As you are about to launch into season 2, I'm sure आपके पास बहुत सवाल हो गए. After all, 2 साल की वेट के बाद क्या exactly पका है आप जानना चाहेंगे? Do we have a mic out in the audience? Hello. My question is for Raj sir. I wanted to know, last year Tata Motors presented the season. So why did you move to Maruti Suzuki this year? Very interesting question. They gave us more money. Simple. Well, there is no, we're not announcing the Starcast. The Starcast is still under wraps. So that will be the next, we're not sure who's going to be there. We're going to disclose. Obviously, we are sure internally who's there in the show, but we will disclose it. No. 24 की शूटिंग शुरू नहीं है तो कैसे मैं करूँगा यार? वो इंटरनेशनल 24 होगा. वो मुझे मिलने आया था वहाँ लॉस एंजलिस में. Raj, I believe the shooting is yet to go on floors. How difficult is it to then rope in sponsors at this stage? See, one of the reason why we rope in a sponsor, and that's why we haven't roped in any other sponsor. And let me tell you this, we haven't even gone to the market talking about 24. You're the first people to whom we are talking about 24, and we wanted one car client.
And Maruti and us have a great association. I was just joking about the money, but Maruti and I have a great association. If you see, they have sponsored IFA with us this year. They have sponsored Jhalak Dikla Ja this year. India's Got Talent. So they are one of our biggest clients on the channel. And 24 is one show where there's a lot of integration for cars. So we couldn't launch the show unless we had a client. And like I said, the maximum what the show lends to itself is for cars. Okay? I mean, you can integrate other products as well, which we may as we go along. But it was very important for us to tie up a sponsor even before we get into production, because there's a lot of logistical issues involved. And that's why we've signed Maruti, and hopefully from next week we get into production. May I add a few lines? Then, the natural question may be, why did Maruti choose this? So idea here was that S-Cross is our most powerful product, number one. Number two, it's an exclusive product coming through our exclusive channel, Nexa channel. So again, when we, saw that 24 season 2 is going to come, Mr. Anil Kapoor is also a very exclusive person as far as brand endorsement is concerned. Like we haven't seen him, endorsing any XYZ brands. So that exclusivity of our Nexa channel and S-Cross had a very good synergy and chemistry matching with Mr. Anil Kapoor as the hero in this season 2. थैंक यू कलसी साहब, क्योंकि मेरे बच्चे अभी भी समझते हैं मैं बेवकूफ़ हूँ, बिकॉज आई हैव नॉट एंडोर्स, मैंने ज़्यादा एंडोर्समेंट नहीं की हैं, तो सब जितने मेरे दोस्त हैं कलाकार हैं, तो आज थैंक यू सो मच कि मैंने कम एंडोर्समेंट मतलब बिल्कुल ही नहीं किए, उसकी वजह से I just stated the facts. थैंक यू. सो समटाइम्स देर से आए मगर दुरुस्त आए, तो मैंने कम किया इसलिए, और बिल्कुल ही नहीं किया इसलिए आज ये शो आप कर रहे हैं क्योंकि मैं एक्सक्लूसिव हूँ. थैंक यू. प्लीज़ गिव अ बिग हैंड प्लीज़. थैंक यू वेरी मच. नहीं तो आजकल तो आप लोग देखते हैं, समझ ही नहीं आता कौन किसको एंडोर्स कर रहा है. अनिल जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि 24 सीजन 1 के बाद आपको फॉक्स स्टूडियो से किस तरह का फीडबैक मिला? क्या बताऊँ मैं आपको, मैं वहाँ का जमाई बन चुका हूँ वाकई. मतलब इतना प्यार, इतना मोहब्बत, इतनी इज्जत, और मैटर फैक्ट इतने खुश हैं वो कि जो क्रिएटर हैं शो के, हावर्ड गॉर्डन साहब, जिन्होंने ही हैज़ बीन विद 24 इन द लास्ट 9 years. ही इज़ विद होमलैंड एंड टायरेंट. ही इज़ द बेसिकली अ शो रनर एंड राइटर एंड अ great novelist also. So he's so happy. Usually he never travels, and it's the first time वो हिंदुस्तान आ रहे हैं 24 की वजह से. हावर्ड गॉर्डन अपनी पत्नी के साथ, और मैरियन जो 20th Century Fox की जो इंटरनेशनल हेड है, वो अपने पति के साथ, वो सब मिलकर आ रहे हैं. इतना उनको पसंद आया जो उन्होंने 24 देखा. मैटर फैक्ट, अभिनय साहब लॉस एंजलिस गए थे, उनकी भी मुलाकात हावर्ड से हुई, और अभिनय साहब कहेंगे कि व्हाट वाज हिज रिएक्शन. आप डायरेक्टर टू क्रिएटर, प्लीज टेल द आधा जवाब मैं दे रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन लॉस एंजलिस जब मैं गया था तब आई मेट हावर्ड गॉर्डन, मैरियन बोथ, एंड दे आर द ब्रेन्स बिहाइंड 24 शुरुआत से. तो दे एक्चुअली द फीडबैक दैट आई गॉट, आई इमीडिएटली कॉल्ड अप अनिल सर एंड सेड कि लुक, ये लोग कह रहे हैं कि यार हमारा फर्स्ट सीज़न उनके फर्स्ट सीज़न के मुकाबले में उनको बेटर लगा. ना ये मजाक कर रहे हैं क्या सच बोल रहे हैं, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है. तो होपफुली मैं तो ये मान के चलता हूँ कि वो मजाक नहीं कर रहे थे. तो दैट वाज द फीडबैक. इससे बेटर तो मेरे ख्याल से फीडबैक हो नहीं सकता. अनिल जी नमस्ते. ये सवाल आपसे है. 24 को करने के बाद एक जुर्म या अपराध है, उसके लिए और अपराधियों के प्रति आपका कुछ नज़रिया बदला? क्योंकि जब एक शो हम करते हैं उसकी इतनी रिसर्च होती है, उसकी स्किन में जाते हैं. देखिए, डेफिनेटली ये शो ऐसा है कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को चेंज करता है, और जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व हुए हैं फर्स्ट सीजन में, उन सब की लाइफ में कहीं ना कहीं परिवर्तन है. इट्स अ लाइफ चेंजिंग शो, एंड ऑब्वियसली वी हैव टू मीट अ लॉट ऑफ पीपल. बहुत लोगों से मिलना पड़ता है. जैसे कि लास्ट सीज़न में राकेश मारिया साहब ने हमारी बहुत मदद की. उनके साथ जब हम रिसर्च करने गए थे तो उन्होंने हमारे राइटर से भी मिले वो, और काफ़ी वक्त दिया.
तो मैं आज ये मंच में उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें हमारी काफ़ी मदद की पहले सीज़न में, और इस सीज़न में भी जितने भी लोग मेरे, मैं ज़्यादा क्योंकि उनके नाम मैं ले नहीं सकता बिकॉज दे आर ऑल वेरी मच इन वेरी हाई पोस्ट इन CBI एंड रॉ and all the big, who protect intelligence, who protect our country. So उसमें वहाँ भी हम लोग we have tried our best to make it as real as possible. So जब आप इतना काम करते हैं, मैटर ऑफ फैक्ट मारिया साहब ने एक ऑफिसर था जो थ्रू आउट पूरे शो में मेरे साथ ही था, तो जब भी मुझे कभी भी कोई भी दिमाग में ऐसा लगता था कि ये कैसे करें, ये कैसे बोलें, ये करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है, ही वॉज कॉन्स्टेंटली देयर विद मी. तो ये सब जब चीज़ें, और उनकी जब मैं लाइफ देखी, जिस तरह वो काम करते हैं, जिस तरह वो अपने आप पूरे ज़िंदगी को अपने डिवोट करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप इंस्पायर होते हैं. सो आई वॉज वेरी वेरी मोटिवेटेड एंड इंस्पायर्ड बाय ऑल द ऑफिसर्स एंड ऑल द पीपल who fight and work, on the front and on the desk and in offices to protect our country. So it is definitely a life-changing show for everybody, all of us connected. Yeah. तो कहीं ना कहीं जैसे कि पिछले शो में I was this character of Jai Singh Rathore protects only the the prime minister, the future prime minister of the country, but इसमें it's actually more than that. It's much bigger than that. He is trying to protect the country. So the story, the arc, the excitement is much, much bigger in the second season. Okay, Manisha? Manisha here. Okay, so Colors की जो shows है वो popular होते जा रही है और TRP numbers भी काफ़ी अच्छे हैं. So what is the success mantra behind this? Hard work and lots of hard work. Thank For the you. whole network. अनिल सर, मनीष न्यूज़ नेशन से. सर मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि थोड़ा माइक. हाँ, ये जानना चाहूँगा कि इस बार जैसा कि बताया कि मिशन इस बार दूसरा होगा, मिशन के अलावा अगर बात करें तो क्या कैरेक्टर्स भी थोड़े बदले जाएंगे इस बार? हाँ बिल्कुल, कुछ किरदार जो थे वो पिछले सीज़न के वो रहेंगे, और काफ़ी नए किरदार इस शो में हैं, काफ़ी नए किरदार और ज़बरदस्त किरदार हैं इस शो में. या कुछ बताना चाहेंगे उसके बारे में, हिंट भी अगर देना चाहें तो? कोई और बॉलीवुड की, कोई और बॉलीवुड की बड़ी सेलिब्रिटी ज़रूर बताएंगे मेरे ख्याल से जब वक्त आएगा. हाँ जी, या प्रोमोज में डालेंगे. हाँ बिल्कुल, यस. I don't think so. She's upset. Let me answer. Yeah, please, Raj साहब आंसर करेंगे. This is one show. I do a lot of shows, right? And Manisha knows that. Whenever they can't get through Manisha, the person they call is me. And I keep pushing them back to Manisha, saying she's the decision maker. But this is one show where you will be amazed with the kind of people from Bollywood and otherwise who called me for the show. So people who don't get into the show get upset with the show. And people who are on the show, I think the recognition that the show gives people, so whoever, if they're not doing another season, obviously they will be disappointed. I won't say upset. But what you should remember is one of the reasons for changing some of the characters is not because we don't want them. It's just because depends on what the storyline is. When you're casting, you have to see the character and you see so you can't have, and that's why this, like Anilji said, this time the show is completely different from the previous show. The last time was assassination of a prime minister, and this time it's a threat to the nation. सॉरी, अजिंक्य देव फर्स्ट सीजन में मर चुके हैं, तो अभी वो कैसे आएंगे फिर से? मैं सब बट एक अलग किरदार में वो लोग हैं, वो प्रोड्यूस कर रहे हैं हमारे साथ उस शो को. तो उस फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव ही इज स्टिल देयर, इन स्पिरिट ही इज स्टिल देयर, बट अदरवाइज ही इज डेड. Mr. Kalsi, my questions to you. Apart from, Anil driving the S-Cross, what is the other association you have with the show? Sorry? Apart from Anil driving the S-Cross, what is the other association you have with the show? As Raj also mentioned, we have, say long-term association with the Colors in the various programs. In this particular program, it's a 360-degree, association, whether it is, digital media, print media, and of course, our vehicles would be, quite visible in the show.
हेलो अनिल 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 सर आपसे सवाल है See, for me, to be honest with you, for me, you know, it's a necessity. For me, it's a necessity. A car today, to live in a city or live in this country without a car is next to impossible. So first and foremost, it's a necessity. It's you know, and second for me is the comfort. And more than that, then of course, you know, once I buy the car, I don't want any wear and tear. You know, uska jo, so I need a sturdy car, you know, which you know, sometimes क्या होता है आप गाड़ियाँ खरीदते हैं और उसके बाद हर 3 महीने में गैराज में चली जाती है तो वो गलत होता है. So these are the 3-4 things which I keep in mind, you know, and of course it has to have a certain exclusivity, certain kind of a, you know, the engine has to be strong. All these things are very, very important. Yes. You know, I must tell you something. One of the things that we have in our contract with Anilji is before we get a sponsor, we have to get it ratified by him कि he will want that sponsor on the show or not. And that tells you a lot about Mr. Anil Kapoor. Anil sir, there is one question that everyone wants to know since the season 1 ended कि टिस्का चोपड़ा का कैरेक्टर वापस लाया जाएगा, her character will be there or will she die in the show? There is a suspense, yeah. कुछ तो और you know हम लोगों को suspense रखना पड़ेगा. So you have to wait and watch. Wait and watch. Okay. पहले एपिसोड में आपको पता चल जाएगा. Okay. नहीं, that's not true. Hi Anil. What is the reason behind your rugged and intense look? Do you have a backstory from season 1? Yes, this look which you see of mine is for 24 second season. तो मैं कुछ 5-6 महीने से दाढ़ी मेरे घर वाले भी बोल रही है इतनी लंबी बड़ी दाढ़ी उगा के क्यों हो रहा है मतलब क्योंकि अभिनय साहब ने कहा कि I want a beard for this character. So this is the first time in my career मैंने beard रखी है फिल्मों में मगर वो artificial थी. तो पहली बार आई एम ग्रोइंग अ रियल बियर्ड फॉर अ कैरेक्टर ऑफ जय सिंह राठौड़. तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली यूर राइट, योर ऑब्जर्वेशन इज राइट. देयर इज अ पास्ट एंड वन ऑफ द रीजंस ही हैज बिकॉज ही हैज नो टाइम रियली टू शेयर बिकॉज ही इज व्हाट ही इज गोइंग थ्रू. सो दैट्स वन ऑफ द रीजंस. या सॉरी, फर्स्ट एपिसोड, पहला एपिसोड देखिए, पहला एपिसोड. हाँ जी, आप बताइए क्या लगता है आपको? The ball is in your court. नहीं, okay, yeah. So watch the first episode, yeah. Do you think that overdose of daily soaps make difficult for this type of content for the audience to explore more? Yeah, actually, this question is the right person to answer this question is Manisha, because this is a question related to stuff that me and Anil sir both are very ignorant about. So I will hand this over to Manisha. She's actually the right person to answer this. Because we have so much, इतना हमारे पास daily soaps है, इसलिए there's a lot of interest and a lot of excitement for shows like 24. Actually, आप लोगों ने जब पूछा था कि जब LA गए थे क्या रिस्पॉन्स था, हम लोग पिछले मंथ मिपकॉम गए थे और पहली बार ही हमने देखा कि हम लोगों ने कई जगह मीटिंग्स लिए थे, कई नहीं लिए थे और बहुत सारे फॉर्मेट होल्डर्स बड़े बड़े हमको जो पहले मीटिंग्स नहीं मिलते थे वो हम सबको ब्रेकिंग बैड, फिक्शन जैसे 24 के स्पेस में शोज़ के लिए दे वर सो एक्साइटेड कि हम बिना मीटिंग लिए पहली बार ही उन्होंने दे कॉल्ड अस बिकॉज दे सेड कि वीव सीन 24 एंड वी नेवर थॉट कि इंडिया में ऐसा प्रोडक्शन वैल्यूज़, ऐसा एक्टिंग, ऐसा स्टोरी टेलिंग भी हो सकता है. सो इट्स ओपनड अप अ होल वर्ल्ड. ऑफ कोर्स डेली सोप्स is what is happening everywhere on every channel, and 24 is a slightly premium property. But I think it will bridge the gaps with digital coming on. A lot of gaps are going to get bridged in the kind of viewing we are doing these days. There are a lot of people who will watch soaps, and there are a lot of people who want to see shows like 24. So I'm hoping with
24 season 2 and we continue to do things like this. चाहे बहुत सारा ना करें पर premium doses में देते रहें. I think it's a matter of time. It is going to happen in a very big way in India also. In the same numbers as daily soaps. Next question. मैं सुना ही नहीं दिया आपने क्या बोला. प्रेम रतन का ट्रेलर. हाँ आपने देखा. मैं नहीं देखूं तो कौन देखेगा. कैसा लगा सर आपको? नहीं मुझे तो ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो उसकी खुशबू जैसे कि पहले दिन से ही पता चल जाती है कि ये खुशबू जो है पूरी दुनिया में फैलने वाली है और वो है प्रेम रतन धन पायो. उस फिल्म को कोई नहीं रोक सकता. थैंक यू सर. Are we done? Yeah. Will that be all? Thank you. Thank you very much then. Thank you for coming, and we need your support because this is something which is completely out of the box, something which is different. We try to do something different, so we need your support. Back it up. Back this association between Maruti and Colors and all of us. And if you do that, we'll do more and more shows like this. So we need your support. Please support us in this endeavor. Thank you very much. Thank you. Thank you.